Hello students, I am Divya Kashyap from Success CDs Education. Today I will conduct a quiz of MCQs from class 10th Science, chapter 15, that is our environment. So what I'm going to do is, I will share a question, give you 4 options, you can make guesses in the live chat, and after 10 seconds I will give you the answer and discuss it. Before starting, I would like to tell you that we have a lot of free content for students of class 10 and we have compiled all the links in a free PDF. Please download the PDF from the link given in the description box below this video. Even you can prepare for board exams with the help of this content, and that too free of cost. So let's start with the MCQ session now. So the first question is, disposable plastics plates should not be used because A. They are made up of lightweight material. B. They are made up of toxic materials. C. They are made up of biodegradable materials. D. They are made up of non-biodegradable materials. And your time starts now. आपको बताना है कि जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट है वो हमें क्यों यूज नहीं चाहिए. And the time is up. And the correct option is, that is, they are made up of non-biodegradable material. That is the option D. राइट तो इसलिए हमें प्लास्टिक्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी होगी वो हमें हार्म करेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग फ्रॉम फूड चेन? ग्रास, डियर, टाइगर. A. The population of tiger will increase. B. Tiger will start eating grass. C. The population of grass decrease. D. Population of tiger decrease and grass increases. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D. That is, the population of tiger will decrease and the population of grass will increase. Next question is, the excessive exposure of humans to UV rays results in A. Damaged immune system. B. Skin cancer. C. Peptic ulcers. D. Damage to lungs. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B. It will cause skin cancers. Next question is, the decomposers in ecosystem A. Convert inorganic materials to simple forms. B. Convert organic material to inorganic forms. C. Do not break down organic compounds. D. None. And your time starts now. And the correct option is option B. जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी करके आप कह सकते हो कि पॉल्यूशन नहीं होता है. तो डिकम्पोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an ecosystem, the 10% of energy available for transfer from one trophic level to next in the form of A. Heat energy. B. Light energy. C. Mechanical energy. D. Chemical energy. और आपका टाइम शुरू होता है अब. Time is up and the correct option is option D. It is chemical energy. Next question is, which of the following are environment friendly practices? A. Carrying cloth bags to put purchases in while shopping. B. Switching off unnecessary lights and fans. C. Walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter. D. All. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ये सारी प्रैक्टिसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय A. carnivores, B. herbivores, C. omnivores, D. decomposers. And your time starts now. Time is up and the correct option is option A. It is occupied by carnivores, that is the flesh eaters. Next question is accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each trophic level is known as A. eutrophication, B. pollution, C. biomagnification, D. accumulation. And your time starts now. Time is up and the correct option is option C. It is biomagnification. जब नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाती है और उनका हर ट्रॉफिक लेवल पे अमाउंट बढ़ता जाता है, उसको हम बायोमैग्निफिकेशन बुलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच डू नॉट फॉर्म इकोसिस्टम आर ए. प्लास्टिक, बी. बायोडिग्रेडेबल, सी. ऑल, डी. नॉन बायोडिग्रेडेबल. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. Time is up and the correct option is option A, that is plastic. Plastic ecosystem नहीं बनाता. Ecosystem mainly consists of abiotic and biotic factors, but it do not consist of plastic. Next question is which of the following is an example of producers? A. cow, B. sundew plant, C. bacteria, D. grass. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D, that is the producers are the grass out of these four options because they have photosynthetic pigment which is capable of trapping solar energy and converting into chemical energy of food. Next question is which of the following is not an example of abiotic factors? A. light, B. plants, C. heat, D. temperature. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. Time is up and the correct option is B, that is plants. देखिए abiotic factors मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स मीन्स लिविंग फैक्टर्स. तो इनमें से ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? ए. नेचुरल फॉरेस्ट, बी. पॉन्ड, सी. लेक, डी. एक्वेरियम. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. Time is up and the correct option is option A, that is the terrestrial ecosystem, that is जो ecosystem land पे हम देखते हैं तो वो हमारा कौन सा है? नेचुरल फॉरेस्ट. अदरवाइज ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन. A. 2, B. 3, C. 6, D. 7. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 3. जो ओजोन है वो ऑक्सीजन से बना है. जब 3 ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो ओजोन बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट. ए. इकोसिस्टम, बी. स्ट्रेटोस्फीयर, सी. ओजोन, डी. ऑक्सीजन. और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. जो फंक्शनल यूनिट है एनवायरमेंट का वो क्या है? इकोसिस्टम. इट इज द फंक्शनल एंड द सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फूड चेन herbivores falls at dash level. A first, B second, C third, D fourth. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B, that is second. First level जो होता है वो producers से occupy होता है, second herbivores से, थर्ड हमारे पास कार्निवोर्स और फोर्थ हमारे पास डिकम्पोजर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फूड वेब द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ए नॉन डायरेक्शनल, बी बाई डायरेक्शनल, सी यूनिडायरेक्शनल, डी एनी ऑफ अबव. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हमें बताना है कि फूड वेब में एनर्जी का फ्लो कैसे रहता है. टाइम इज अप and the correct option is option C. It is unidirectional. क्योंकि फूड वेब हमारे पास होता क्या है? They are basically interconnected food chains, right? और फूड चेन में हमेशा जो एनर्जी का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है. इट इज यूनिडायरेक्शनल. तो फूड वेब्स पे भी फ्लो ऑफ एनर्जी क्या रहता है? यूनिडायरेक्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फूड वेब. A. The energy available at each level gets diminished. B. Energy moves progressively through different levels. C. A and B. D. None. And your time starts now. हमें बताना है कि फूड वेब में इनमें से क्या चीज हमें देखने को मिलती है. Time is up and the correct option is option C. We get to see both A and B. या एक तो एनर्जी अवेलेबल हर लेवल पे आगे आगे जैसे मूव होता रहता है फूड, एनर्जी कम होती रहती है एंड एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू डिफरेंट लेवल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ए सनलाइट हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स कार्निवोर्स, बी सनलाइट प्रोड्यूसर्स कार्निवोर्स हर्बीवोर्स, सी सनलाइट हर्बीवोर्स कार्निवोर्स प्रोड्यूसर्स, डी sunlight producers herbivores carnivores. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D. The energy flow in ecosystem is पहला level sunlight, then we have producers, फिर herbivores और फिर flesh eaters carnivores. Next question is which refrigerant is responsible for depletion of ozone layer? A. CFC, B. FCC, C. FCF, D. CCF. And your time starts now. Time is up and the correct option is option A. They are CFC, that is chlorofluorocarbons, which are basically used as refrigerant in refrigerators, ACs and all. और इनके फ्यूम्स जो होते हैं वो अपर एटमॉस्फेयर पे जाकर ओजोन पे इफेक्ट करते हैं एंड दे कॉज थिनिंग ऑफ ओजोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स टू कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी? A 1%, B 10%, C 50%, D more than 50%. And your time starts now. हमें बताना है कि कितना परसेंटेज सनलाइट का एक्चुअली प्लांट यूज करते हैं टू कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी. टाइम इज अप and the correct option is option A, that is 1% of the total solar energy is actually used by plants to convert into food energy. Next question is, if there is no atmosphere around the earth, the temperature of earth will A. increase, B. go on decreasing, C. increase during day and decrease during night, D. unaffected. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B, that is the temperature of earth without atmosphere would go on decreasing.
Next question is, what would happen if all the oxygen present in the environment is converted to ozone? A. We will be protected more. B. It will become more poisonous and kill living forms. C. Ozone is not stable, hence it will be toxic. D. It will help harmful sun radiations to reach Earth and damage mainly all life forms. And your time starts now. Time is up and the correct option is option C. Ozone is not that much stable, hence it will be toxic for us. Next question is, among the following, which one is not correct for the use of large amount of fertilizers and pesticides? A. They are eco-friendly. B. They turn the fields barren after some time. C. They adversely affect the useful component from the soil. D. None. And your time starts now. Time is up and the correct option is option C. It will adversely affect the useful component from the soil. Next question is, one of the following processes is not a step involved in water cycle operating in nature. A. Evaporation. B. Transpiration. C. Precipitation. D. Photosynthesis. And your time starts now. Time is up and the correct option is option D. It is photosynthesis. Next question is, ozone hole means A. A large size hole in ozone layer. B. Thinning of ozone layer. C. Small hole scattered in ozone layer. D. Thickening of ozone in the ozone layer. And your time starts now. Time is up and the correct option is option B. जो ozone hole होता है, basically it means the thinning of ozone layer. So with this we come to an end of MCQ quiz. Thank you for watching the video. If you liked it, hit the like button, share the video and hit the bell icon for the updates on next upload. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video with new MCQ session. Till then, take care. Bye-bye.